Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Right now, just we are watching the market, where the market is going on. Right now, we can take any trade because of some illusions are here, and this is again a better support resistance, and this should be also be a part of resist support, and this is the bigger resistance for today. Today market another आज के मार्केट का दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 19,800 पे है, जैसा कि आप देख सकते हो। 19,600 ये रहा, 19,700। अच्छा, अब 19,700 पे आ गया, ठीक है। तो 19,700 पे इसको एक और सपोर्ट बना दो भाई। 19,700 कहाँ है भाई? 19,700 19,700 पे अब एक और सपोर्ट आ गया है। 19,700 ये रहा। चलो भैया, ये हो गया अनदर सपोर्ट। उसको मैं करता हूँ येलो लाइन से, ठीक है। ये अनदर सपोर्ट हो गया 19,700 पे। मार्केट भी अब मूव दे चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे यार, इसको क्या हो गया? मार्केट ने मूव दे दिया, ठीक है। पर ये ट्रैप में फंसना नहीं है, अभी कोई भी मूव नहीं है। अभी तो ये मार्केट को तैयार ही करे जा रहा है, पर हाँ, यहाँ से कोई ना कोई तो मूव तैयार होगी, क्योंकि मार्केट खुलते ही पहले अप साइड गया और अब ये डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉट टू वरी अबाउट दैट, जस्ट वी आर गोइंग टू वॉचिंग दिस, जस्ट वॉचिंग फॉर दिस, वॉचिंग फॉर। चलो भाई, जस्ट वॉचिंग, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। 19,700 और डाउन साइड में तो मैंने बताया ही। अरे यार, क्या हो रहा है यार, आज मेरे माउस की बैटरी थोड़ी सी हो गई, डिस्चार्ज हो गई, तो दूसरी बैटरी लाने जाऊंगा। जब जब दूसरी बैटरी लगाऊंगा। एक ये तो सपोर्ट है ही 540 का, पर अकॉर्डिंग टू दिस 550 नहीं है कोई सपोर्ट। 550 डायरेक्ट 500 पे है, यानी 19,500 पे सपोर्ट है। तो इस पे आ जाओ डायरेक्ट 19,500। ये रहा, ये सपोर्ट है, ठीक है। यानी कि 19,500 पे ये भी नहीं है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, पर मेजर सपोर्ट इसे मान सकते हो, ठीक है। और इसे भी ये भी मेजर ही सपोर्ट है, और मेनली सपोर्ट फिर आपका यहाँ पे है ये, ठीक है। तो इसे ऐसे डाल देते हैं याद रखने के लिए कि भैया ये भी हमारा मेजर सपोर्ट है, याद रखने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करके कर देते हैं येलो। नो, येलो नहीं, कुछ और कर देते, ऑरेंज, ठीक है। और इसका ये कलर, ठीक है। यहाँ तो दोनों की कलर हो ही रखी है। मैंने क्या बोला? ये जस्ट फॉर ट्रैप।
स्कैल्प वगैरह तो बन ही सकते हैं, बट आई थिंक वो ये ट्रेड लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, बेसिकली वेटिंग is the best thing which can make you profitable। और तो और आज के 10 बजे कुछ तो आने वाला है, कुछ तो ऐसी न्यूज आने वाली है 10 बजे, तो हम 10 बजे का इंतजार करते हैं। दिस इज बेटर फॉर अस। देखो थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। बुक्स 11.69 55 प्लस, पीसीआर 1.2 का है। तो भैया यहाँ पे 19 चीजों पे मार्केट है। कॉल 1.79 सीआर, यानी 11.94 सीआर कॉल है। पुट 28 सीआर 11.9 0.9। मतलब दोनों कुछ खास डिफरेंसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, इज इक्वल हैं। कॉल ओआई 8.44 सीआर, पुट ओआई 8.59। पुट ओआई ज़्यादा है, यानी कॉल साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सपायरी के दिन में फ्यूचर निफ्टी की भी बहुत अच्छी खासी कॉल है। 1.27 सीआर है भाई, तो फिर चांसेस तो अपसाइड के बनते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन गाइस। 1.8 सीआर फॉर द निफ्टी PE, CE 1.71 सीआर है। यहाँ से मेक और ब्रेक, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से मेक और ब्रेक जो भी होएगा, यहाँ पे अभी कुछ ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मेक होएगा कि ब्रेक होएगा। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम इससे। तो चलो गाइस, बैंक निफ्टी लो भैया, ब्रेकआउट डाउन हो गया। अभी अभी भी ट्रेडिंग का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम। जब तक इस लेवल को आसपास न जाए तब तक कोई चांसेस नहीं है। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं यार, टाइम खराब है, कुछ भी लेने से बाद में दिक्कतें आ जाती हैं।
आपको गाइस कुछ दिख रहा होगा, मे भी अगर हो सकता है कुछ दिख रहा होगा। मेरे को जो दिख रहा है कुछ ऐसा सीन हो रखा है। और फिर इसका यूज करेंगे। ये आया, फिर आई थॉट ये है, फिर ओ भाई ये क्या हो गया, ये यहीं पे रुक गया, तो हम इसे नहीं लेंगे। Let's take another path, right? तो यहाँ से गाइस ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऐसा, और आई थिंक ऐसा या फिर कुछ भी हो सकता है, ये और नीचे भी जा सकता है। पर मैंने आपको ये दिखाया कि ये पाथ किस साइड जा रहा है, और ये तो क्लियर ही दिख रहा है आपको क्या सीन हो रखा है। तो गाइस नॉर्मल सा हम बनाते हैं एक टब, और उसके अंदर देते हैं पानी को भर। देख ये हो गया कप, और भाई साहब यहाँ पे हैंडल बनेगी, और आई डोंट थिंक ये हैंडल बनाना चाहते, और हैंडल तो नहीं बन पाएगा, पर कोई एक ये हम डाल के रखते हैं। maybe it should be happen for this, अदरवाइज हम एक और चीज कर सकते हैं, और वो चीजें हैं क्या, कि हम यहाँ पे एक लाइन दे सकते हैं कि भाई साहब इस लाइन, ये ये नो नो ये लाइन नहीं देते हैं, और इसे भी नहीं देते। ठीक है भाई साहब, अगर इस लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, तो डाउन। अगर इस लाइन को मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए, तो इसको
विड्रॉल की सिचुएशन ऐसा कुछ मेजर्स ले सकें, पर जनरली मुझे नहीं लगता कोई डिसरप्टिव और पॉलिसी होगी या फिर कोई नेगेटिव इस यहाँ से आ सकता है। आई थिंक जो गवर्नर साहब की पुरानी पॉलिसी रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी रही है और अकोमोडेटिव पॉलिसी रही है, मुझे लगता है उसी की कंटिन्यूएशन के ऊपर पॉलिसी के आउटकम होंगे। तो मार्केट के लिहाज से मुझे नहीं लगता आज कोई बहुत बड़ा फेरफार आ सकता है। ओके, बाजार के लिए बहुत ज्यादा बदलाव हो इसकी उम्मीदें हैं कम, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से क्या कुछ खास बातें हो सकती है? वृंदा जी बताएं, आप क्या खास बातें देखना चाहती हैं पॉलिसी में? जीडीपी पर सपोर्ट मिलेगा और साथ ही जो कैपेक्स अब तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ही जो इन्वेस्टमेंट का पुश था वो चल रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रही है। और क्योंकि देखिए ये जो क्या बोलते हैं, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी ऑलरेडी 75% से ज्यादा हो गई है और इकोनॉमी के पॉजिटिव्स को देखते हुए इंडस्ट्री इज ऑल्सो विलिंग टू कम टू एक्सपैंड कैपेसिटी। सो क्योंकि इसका असर दिख रहा है हमें बैंक क्रेडिट पर। इस बार अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से जुलाई 14 तक, तो जो क्रेडिट है वो 8.8% बढ़ गई है, 8.6%, और जबकि लास्ट ईयर 3.5% थी। और सिमिलरली डिपॉजिट की भी अच्छी ग्रोथ है, 5.5% ग्रोथ है अगेंस्ट 2.1%। तो यानी बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेल एंड बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट दिस ग्रोथ। सो जीडीपी की तरफ से उनकी चिंताएं नहीं रहेंगी, लेकिन उनको ये लगेगा कि हम अपनी ग्रोथ को कैसे रिंग फेंस करें। तो उसके ऊपर वो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत हेडविंड्स है, तो इसको लेके आरबीआई गवर्नर कुछ अनाउंस कर सकते हैं। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, हाँ इन्फ्लेशन तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो तो 4.3 से 4.8 हो गया और अभी 6.5 के आगे जाने की एक्सपेक्टेशंस है जुलाई में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां तक हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसी तरफ कोर इन्फ्लेशन घट रहा है। 5.2 था मई में, फिर 5.1 हुआ और इस बार 5.0 तक के एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो ग्लोबल स्लोडाउन से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो घटे हैं, इनपुट कॉस्ट जो घटे हैं, उसका इम्पैक्ट कोर इन्फ्लेशन पर दिख रहा है। तो ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो इंक्रीज आई है वो मेनली ड्यू टू फूड एंड सम अदर कमोडिटीज। तो ये इन्फ्लेशन की तरफ से गवर्नर की थोड़ी चिंता बनी रहेगी कि हम देखें कि ये इन्फ्लेशन कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सो इन्फ्लेशन का शायद अनुमान बढ़ा सकते हैं, 5.1 उन्होंने कहा था, तो शायद 5.2 या 5.3 कर सकते हैं इन्फ्लेशन के आंकड़े के लिए। तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.9% पे जो गवर्नमेंट ने कहा था उस तरफ बना रहेगा। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट दिस इज एन इलेक्शन ईयर, तो आगे चलते जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से इन्फ्लेशन के ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये सब बातों को देखिए इस बार गवर्नर ज्यादा चेंजेस तो नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स रेपो रेट में चेंज की कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, और न्यूट्रल स्टांस भी वही रहेगा, स्टांस भी न्यूट्रल पे नहीं जाएगा, स्टांस भी चेंज नहीं होगा। और ये सब हम अगले साल ही बजट के बाद ही इसमें कुछ चेंजेस देख सकेंगे। ओके, सेठी साहब, बाजार के लिहाज से कुछ बड़ा या डायरेक्शनल मूव आने की संभावना, और स्पेशली बैंक और बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए जहां तक आरबीआई पॉलिसी का सवाल है, स्टेटस को जैसे सब समझ रहे हैं वैसे स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, बट ये डिफिकल्ट होगा थोड़ा डिसीजन, बिकॉज जब पिछली बार आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो उस समय ये सर्टेनिटी नहीं थी कि फेड यूएस में रेट हाइक करेगा। वहां पे भी पॉज कर चुके थे पहले, तो उन्होंने रेट हाइक करी जुलाई में, फिर अब माना जा रहा है कि सितंबर में भी रेट हाइक करेंगे। फिर हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं, मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, वेजिटेबल्स तो खास करके टमाटो वगैरह के दाम बढ़े हैं, फिर राइस वीट के भी प्राइसेस बढ़े हैं, राइस के एक्सपोर्ट पे भी हमने बैन लगाया। तो इन सब को देखते हुए स्टेटस को मेंटेन करेंगे तो वो एक राहत होगी बाजार के लिए। मतलब मुझे लगता है अगर कुछ नहीं बढ़ाएंगे तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, और जो बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है वहां पे फिर मुझे लगता है एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। और बाकी जो रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछली बार कंसेंसस था ऑलमोस्ट कि नवंबर दिसंबर में रेट कट करेंगे तो भारत में, तो वो अब पोस्टपोन होकर मुझे लगता है फरवरी मार्च के जी सेठी साहब, एक गवर्नर साहब बोलना शुरू करें उससे पहले एक क्विक पॉल मुझे लेना है, सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे लाइए, कि ब्याज दरें घटना जो शुरू होगी वो इस साल यानी कि 2023 में होगी या 2024 में? आप में से हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं जो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
किस किस को लगता है कि इस साल ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है 2023 में? 2023 में कोई भी नहीं। बगा साहब, सारे 2023 में कोई कॉन्सेंसस? Good morning. Namaskar. This is the bi-monthly monetary policy statement for August, and this is how it goes. As we celebrate India's 77th Independence Day in a few days, I am happy to note that the Indian economy is exuding enhanced strength and stability despite the massive shocks to the global economy in recent years. Our economy has continued to grow at a reasonable pace, becoming the 5th largest economy in the world and contributing around 15% to global growth. We have also made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust, with lower leverage, improving debt servicing capacity, and strong profitability. Lower current account deficit and ample capital flows have imparted strength to our external sector. The resultant accretion to foreign exchange reserves has provided a buffer against external shocks. Overall, India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources, and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. In this background, the Monetary Policy Committee met on 8th, 9th, and 10th of August. After detailed deliberation on all relevant aspects, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. It's 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. Headline inflation, after reaching a low of 4.3% in May 2023, rose in June and is expected to surge during July-August, led by vegetable prices. While the vegetable price shock may reverse quickly, possible El Nino weather conditions, along with global food prices, need to be watched closely against the backdrop of a skewed southwest monsoon so far. These developments warrant a heightened vigil on the evolving inflation trajectory. The cumulative rate hike of 250 basis points undertaken by the MPC so far is working its way into the economy. Nevertheless, domestic economic activity is holding up well and is likely to retain its momentum despite weak external demand. Considering this confluence of factors, the MPC decided to remain watchful and evaluate the emerging situation. Consequently, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% with preparedness to act
should the situation so warrant. The MPC remains resolute in its commitment to align inflation to the 4% target and anchoring of inflation expectations. Further, with monetary transmission still underway, and I have given some details in the footnote of my statement with regard to this. When I say monetary policy transmission is still underway, there are some additional information given in the footnote. Those of you who are interested may have a look at it. Further, with monetary transmission still underway and headline inflation remaining higher than the 4% target, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I would now like to provide our assessment of the growth and inflation scenario. First, I would like to take up global growth. The global economy continues to face daunting challenges of elevated inflation, high levels of debt, tight and volatile financial conditions, continuing geopolitical tensions, fragmentations, and extreme weather conditions. Belying earlier apprehensions, a number of economies have demonstrated remarkable resilience, and the grim prospects of hard landing appear to have receded. Nevertheless, global growth is likely to remain low by historical standards in the current year and also in the next few years. Despite upward revision in the global growth forecast for 2023 by the International Monetary Fund. World merchandise trade volume growth is projected by the WTO to decelerate from 2.7% in 2022 to 1.7% in 2023. Headline inflation is easing unevenly across countries and remains above the target in major economies. While the pace of monetary tightening has been scaled down, policy rates could stay higher for longer. Financial markets, which had been buoyed by expectations of an early end to the cycle of monetary tightening, have turned volatile with sizable two-way movements in response to recent rating events and incoming data. Turning to global growth, these external factors are likely to impinge on the growth prospects of most advanced and emerging economies. India is, however, expected to withstand these external headwinds far better than many other countries. The momentum of overall economic activity in India continues to be positive. On the supply side, crop sowing has picked up with steady progress in the southwest monsoon. The temporal and spatial distribution of monsoon has, however, been uneven. Industrial activity is holding ground, as is evident from the latest data on Index of Industrial Production, that is IIP, Core Industries Output, and Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing. Buoyant services activity is reflected in healthy expansion in e-way bills, toll collections, railway freight, and a sharp jump in services PMI. On the other hand, commercial vehicle sales and domestic air cargo traffic contracted during Q1 of the current financial year. Aggregate demand conditions continue to be buoyant. Among urban demand indicators, domestic air passenger traffic, passenger vehicle sales, and households credit are exhibiting sustained growth. In the case of rural demand, tractor and fertilizer sales improved in June, while two-wheeler sales moderated. High growth in agricultural credit and improving sales volume of major fast-moving consumer goods, that is FMCG companies, suggest incipient recovery in rural demand, which will be reinforced by improving
Kharif prospects. So what I have done under growth is that first I highlighted about the supply conditions, the supply side factors. Then I have highlighted the aggregate demand conditions consisting of both rural and urban demand. And let me now turn to investment activity. Investment activity gained further steam on the back of government capital expenditure, rising business optimism, and revival in private capex in certain key sectors. Continued increase in import and production of capital goods further reaffirms this trend. Construction activity also remains strong in first quarter of this year, as indicated by healthy growth in cement production and steel consumption. Capacity utilization in the manufacturing sector at 76.3% remained above the long period average, remained above the long-term average of 73.7%. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources taken together has increased by rupees 7.5 lakh crore during the financial year 23-24 so far, that is up to July 28th, as compared with 5.7 lakh crore a year ago. So just to repeat the figures, the flow of resources to the commercial sector in the current year so far is 7.5 lakh crore, and in the corresponding period of last year, it was 5.7 lakh crore. On the downside, however, merchandise exports and non-oil, non-gold imports contracted further in June, and the growth in services exports decelerated amidst slowing external demand. Looking ahead, these underlying developments and the upcoming festival season are expected to provide support to private consumption and investment activity. The spillovers emanating from weak external demand and protracted geopolitical tensions, however, pose risks to this outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. The risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. The moderation in headline inflation to 4.6% in Q1 of 23-24 was in line with the projections set out in the June MPC meeting. There was pickup in headline inflation to 4.8% in June due to an upturn in food inflation. On the positive side, inflation excluding food and fuel, that is core inflation, has softened by more than 100 basis points from its recent peak in January 2023. The month of July has witnessed accentuation of food inflation, primarily on account of vegetables. The spike in tomato prices and further increase in prices of cereals and pulses have contributed to this. Consequently, a substantial increase in headline inflation would occur in the near term. Going by the past trends, vegetable prices may see a significant correction after a few months. The prospects of Kharif crops have also brightened thanks to improvement in the progress of the monsoon. Uncertainties, however, remain on domestic food price outlook due to sudden weather events and possible El Nino conditions in August and September. August and beyond. Global food prices are also exhibiting a hardening bias on renewed geopolitical tensions. Crude oil prices have firmed up in the recent weeks, and its outlook is clouded by demand-supply uncertainties. Assessment of the future trajectory of inflation is a continuous process. We have a choice
to modify our inflation projections in every meeting of the MPC if warranted, in the interest of better guidance, or avoid frequent changes and revise them only on fewer occasions for simplicity of presentation. Given the continuing uncertainties, our latest CPI inflation projection for 2023-24, assuming a normal monsoon, is revised to 5.4%, with Q2 at 6.2%, Q3 at 5.7%, and Q4 at 5.2%. Let me just repeat these numbers for better clarity. CPI inflation projections for 2023-24, that is for the current year, assuming a normal monsoon, as I have said, is revised to 5.4%, with Q2 at 6.2%, Q3 at 5.7%, and Q4 at 5.2%. Further, CPI inflation for first quarter of the next financial year, that is 2024-25, is projected at 5.2%. The risks are evenly balanced. Headline inflation projection for the second quarter of 23-24, that is, for the months of July, August, and September this year, has been revised up substantially, primarily due to price shock from vegetables. Given the likely short-term nature of these shocks, monetary policy can look through high inflation prints caused by such shocks for some time. The frequent incidences of recurring food price shocks, however, pose a risk to anchoring of inflation expectations, which was underway and which has been underway since September 2022. The role of continued and timely supply-side interventions assumes criticality in limiting the severity and duration of such shocks. In such circumstances, it is necessary to be watchful of the emerging trends and the risks to price stability. We have to stand in readiness to go beyond keeping Arjuna's eye to deploying policy instruments, if necessary. I reiterate what I said in the previous June policy statement. Bringing headline inflation within the tolerance band is not enough. We need to remain firmly focused on aligning inflation to the target of 4%. With this, I would now like to take up the liquidity and financial market conditions. The level of surplus liquidity in the system has gone up in the recent months on the back of the return of rupees 2,000 banknotes to the banking system, RBI surplus transfer to the government, pickup in government spending, and capital inflows. The overall daily absorption under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, was 1.7 lakh crore in June and 1.8 lakh crore in July this year. Despite such surplus liquidity, market response to RBI's 14-day variable rate repo auctions, that is VRRR auctions, was lukewarm. Instead, banks preferred to place their surplus liquidity in the less remunerative standing deposit facility, that is SDF. Although the fine-tuning VRRR auctions of 1 to 4 days maturity during this period evoked better response from the market, this essentially, let me just read it again. Although the fine-tuning VRRR auctions of 1 to 4 days maturity during this period evoked better response from the market, this essentially reflects greater risk aversion among the banks to park large funds under the main operation. In this context, it is necessary to reiterate that fine-tuning operations, that is overnight operations up to 13 days, are undertaken to deal with special or exceptional situations and cannot become a rule. In recent years,
our stated stance on liquidity is to maintain adequate liquidity in the system to meet the productive requirements of the economy. Excess liquidity, on the other hand, can pose risks to price stability and also to financial stability. Hence, efficient liquidity management requires continuous assessment of the level of surplus liquidity so that additional measures are undertaken as and when necessary to impound the element of excess liquidity. Accordingly, it has been decided that with effect from the fortnight beginning August 12, scheduled banks shall maintain, I repeat, scheduled banks shall maintain an incremental cash reserve ratio, that is ICRR, of 10% on the increase in their net demand and time liabilities, that is NDTL, between May 19th and July 28th. I would like to read this sentence again so that the message gets across. It has been decided that with effect from 12th of August, scheduled banks shall maintain an incremental CRR, that is ICRR, of 10% on increase in their NDTL between May 19th and July 28th. And what I'm now going to say is equally important. This measure is intended to absorb the surplus liquidity generated by various factors referred to earlier, including the return of rupees 2,000 notes to the banking system. This is purely a temporary measure for managing the liquidity overhang. Even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. We have reviewed the position, and on that basis alone, on the basis of our internal assessment, I am making this statement that even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. The incremental CRR will be reviewed on 8th September or earlier with a view to returning the impounded funds to the banking system ahead of the festival season. I must add that the existing cash reserve ratio, that is CRR, remains unchanged at 4.5%. I would now like to focus on financial stability. The Indian financial sector has been stable and resilient as reflected in sustained growth in bank credit, low levels of non-performing assets, and adequate capital and liquidity buffers. Macro stress tests for credit risk reveal that scheduled commercial banks would be able to comply with the minimum capital requirements even under severe stress scenarios. There is, however, no room for complacency because it is during tranquil and good times that vulnerabilities may creep in. Hence, buffers are best built up during these periods. A stable financial system is a prerequisite for price stability and sustained growth. This is a shared responsibility in which regulated entities like banks, NBFCs, and others are important stakeholders. On its part, the Reserve Bank remains steadfast in its commitment to safeguard the financial system from the emerging and potential challenges. We expect the same from the regulated entities also. As regards the external sector, India's current account deficit was contained at 2% of GDP in 2022-23 as compared with 1.2% in 2021-22. Merchandise trade deficit has narrowed in the first quarter of the current financial year, that is 23-24, with contraction in imports exceeding contraction in exports. Services exports and remittances are, however, expected to provide cushion to the current account deficit. We therefore expect the current account deficit to remain eminently manageable during the current financial year also.
On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have remained buoyant in 2023-24, that is in the current year so far. Net FPI inflows have been US $20.1 billion up to August 8, which is the highest since 2014-15. In the corresponding period of the previous year, there were net outflows of $12.6 billion US dollars. The inflows under external commercial borrowings also witnessed a turnaround with net inflows of $6 billion US dollars during April-June this year, as against net outflows of $2.9 billion US dollars a year ago. Net foreign direct investment, that is net FDI flows to India, on the other hand, fell to $5.5 billion during April-May 2023 from $10.6 billion a year ago, reflecting a global slowdown in FDI inflows or in FDI flows. Latest available data suggest that India's external debt to GDP ratio improved to 18.9% at the end of March 23 from 20% at the end of March 2022. The Indian rupee has remained stable since January 2023. Foreign exchange reserves have crossed the mark of US 600 billion. The umbrella has gathered strength, and I am not saying this in the context of the monsoon rains. I would now like to proceed and announce certain additional measures. As you would be aware, we announced several measures as a part of the MPC statement, and a number of these measures have very far-reaching consequences, and they make a lot of impact on our overall financial inclusion, on our financial, on deepening of credit, on the spread of UPI, and on other aspects of the economy. So we have a few measures. I request your continued patience. The first announcement relates to review of regulatory framework for financial benchmark administrators. It has been decided to revise the extant regulations issued in June 2019 and put in place a comprehensive risk-based framework for administration of financial benchmarks. This will cover all benchmarks related to foreign exchange, interest rates, money markets, and government securities. The revised directions will provide greater assurance about the accuracy and integrity of the financial benchmarks. The next announcement relates to review of regulatory framework for infrastructure debt fund NBFCs, that is IDF NBFCs. At present, infrastructure debt funds provide refinancing facilities for lenders in the infrastructure sector. The extant regulatory framework for IDFs has been revised. The key changes in the revised framework are: 1. Withdrawal of the requirement to have a sponsor for the IDFs. 2. Allowing IDFs to finance toll operate transfer, that is TOT projects, as direct lenders. 3. Permitting IDFs to raise funds through ECBs. And 4. Making tripartite agreements optional for PPP projects. These changes are expected to further augment the capacity for infrastructure financing in the country. The next announcement relates to greater transparency in interest rate reset of equated monthly installments based floating rate loans. Now, let me just read it again. I think that was too long. The next announcement relates to bringing in greater transparency in interest rate reset of EMI installment-based floating interest loans. It is proposed to put in place a transparent framework for reset of interest rates on floating interest loans. The framework will require regulated entities to, again, there are various components.
it will require the regulated entities to, number one, clearly communicate with borrowers for resetting the tenor and or the EMI. Number two, provide options for switching to fixed rate loans or foreclosure of loans. 3, disclose various charges incidental to the exercise of the options. And 4, ensure proper communication of key information to the borrowers. These measures will further strengthen consumer protection. The next announcement relates to consolidation and harmonization of instructions for supervisory data submission. The Reserve Bank has from time to time issued several guidelines on submission of supervisory returns by the supervised entities. It has been decided to consolidate and harmonize such guidelines into a single master direction to reduce compliance burden and to promote greater ease of doing business for supervised entities. And the next announcement, actually there are 3 announcements within this announcement, and it relates to UPI. And basically the announcements are related to bringing in conversational payments and offline capacity on the UPI, enhancement in transaction limit of small value offline digital payments. The details are as follows. With the objective of harnessing new technologies for enhancing the digital payments experience for users, it is proposed to, number 1, enable conversational payments on UPI, which will enable the users to engage in conversation with artificial intelligence powered systems to make payments. Number 2, introduce offline payments on UPI using near field communication technology through UPI Lite on device wallet. And number 3, enhance the transaction limit for small value digital payments in offline mode from rupees 200 to rupees 500 within the overall limit of rupees 2000 per payment instrument. These initiatives will further deepen the reach and use of digital payments in the country. And this is the final announcement, the next one, and it's really impactful. We expect this announcement going forward will have a huge impact on our credit sector. The Reserve Bank, in association with the Reserve Bank Innovation Hub, started a pilot project in September last year for frictionless credit delivery through end-to-end digital processes, starting with Kisan Credit Card Loans, that is KCC loans. The pilot for KCC loans is currently operational in select districts of Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, UP, and Maharashtra. Recently, dairy loans have been included in the pilot project in select districts of Gujarat. Based on the learnings from the pilots and to expand the scope of end-to-end digital lending processes, a public tech platform for frictionless credit delivery. I repeat, a public tech platform for frictionless credit delivery is being developed by the Reserve Bank Innovation Hub. The platform is intended to be rolled out as a pilot project in a calibrated manner. It will have an open architecture and open application programming interface, that is API and standards, to which all financial sector players can connect seamlessly. This initiative will accelerate the penetration of credit to the hitherto underserved regions and further deepen financial inclusion in our country. Let me now conclude. We have made good progress in sustaining India's growth momentum. While inflation has moderated, the job is still not done. Inflationary risks persist amidst volatile international food and energy prices, lingering geopolitical tensions, and weather-related uncertainties. In charting the course of monetary policy, we continuously assess the impact of our past actions, the evolving inflation dynamics,
and the implications of the incoming data for the economic outlook. I reiterate our commitment to align CPI inflation to the 4% target on a durable basis. We do look through idiosyncratic shocks, but if such idiosyncrasies show signs of persistence, we have to act. As we prepare to celebrate the Independence Day, the air is filled with hope and promise. Let me end by recalling the prophetic words of Mahatma Gandhi. And it is as follows. I have no doubt that our country would rise to the greatest height among the nations of the world. Thank you. Namaskar. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब अपनी पॉलिसी पेश करते हुए और पॉलिसी में ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरें जस की तस 6.5% पर रखी गई, न बढ़ाई गई न घटाई गई। लेकिन इस पॉलिसी में 4 बड़ी बातें हुई। पहली बात, ब्याज दरों में बदलाव कोई नहीं। लेकिन दूसरी बड़ी बात, महंगाई के अनुमान में बदलाव किया गया है। जहां दूसरी तिमाही यानी कि ये जो तिमाही चल रही है इसमें महंगाई का अनुमान 1% से बढ़ाया गया है, 5.2% से 6.2%, यानी कि महंगाई भारी पड़ती हुई दिख रही है। तीसरा और बड़ा बदलाव हुआ है, बैंकिंग सिस्टम से नकदी निकालने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। एनडीटीएल में अब 10% ज्यादा आईसीआरआर मेंटेन करना होगा और इसका बड़ा असर आप बाजार पर पड़ते हुए देख रहे हैं, बैंकिंग शेयरों पर पड़ते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर तेजी से लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और बाजार में भी तेज गिरावट आती हुई दिख रही है। तो बाजार के लिए ये पॉलिसी इस लिहाज से नेगेटिव होती हुई दिख रही है। और चौथा और बड़ा एक और फैसला कि ग्रोथ के अनुमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, न पूरे वित्त वर्ष के लिए और न ही किसी भी तिमाही में। ग्रोथ का अनुमान जो पिछली पॉलिसी में था वही इस बार भी 6.5% के आसपास रखा गया है। कुछ और बड़ी बातें इस पॉलिसी की, एमपीसी का दरें स्थिर रखने का फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। आगे जिस तरह की स्थिति होगी उसी हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अकोमोडेटिव रुख है उसको धीरे धीरे वापस ले लिया जाए। इस बात को लेकर एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों के बीच में सहमति बन चुकी है। और महंगी सब्जियों के और खाने पीने की चीज़ों के चलते जुलाई और अगस्त के महीने में भी महंगाई ऊंची रहेगी और वित्त वर्ष 2024 में महंगाई का अनुमान 5.4% किया गया है। यह है पॉलिसी की 10 बड़ी बातें। आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल हमारे साथ है। अजय बग्गा साहब हैं, अतुल जोशी साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, अश्विनी कुमार साहब हमारे बैंकिंग सिस्टम से यूको बैंक के सीएमडी हैं, वृंदा जागीरदार जी और साथ ही विकास खेमानी साहब, विकास सेठी साहब और हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले अश्विनी कुमार साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, चूंकि सबसे बड़ी बात पॉलिसी में जो निकल कर आ रही है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए है, जहाँ पर लिक्विडिटी सिस्टम में से निकालने का फैसला किया है आरबीआई ने। ये जो 10% आईसीआरआर बढ़ाया जाएगा एनडीटीएल पर, कितने पैसे सिस्टम से बाहर निकलेंगे और बैंकिंग सिस्टम के लिए या जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? देखिए, अभी जो गवर्नर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है आज बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन के लिए, जिसमें आईसीसीआर को बढ़ाया गया है, 10% इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ उसको 12 अगस्त से लेके और 8 सितंबर को दोबारा वो रिव्यू करेंगे। बट इसमें एक चीज़ देखिए, वो 10% ऑन इंक्रीमेंटल एनडीटीएल, जो इंक्रीमेंटल एनडीटीएल मई 19 से जुलाई 28, तो मेरे को लगता है इस बीच में बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे बैंक इस टाइम लिक्विडिटी सरप्लस में है और ग्रोथ को लेके कोई कंसर्न किसी भी बैंक की पोजीशन में नहीं आना चाहिए। इंक्रीमेंटल जरूर आएगा लेकिन ग्रोथ कहीं पे इम्पैक्ट नहीं होगी। क्रेडिट ग्रोथ के लिए सरप्लस लिक्विडिटी और सफिशिएंट सरप्लस लिक्विडिटी अवेलेबल है बैंकिंग सिस्टम के पास। मैं जहाँ तक यदि यूको बैंक की बात करूँ तो हमारे बैंक के लिए आईसीआरआर के अंदर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। जो मैंने अभी अपने बैंक का डाटा इस दौरान लिया तो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। हमारे पास एलसीआर अभी 160% से ऊपर की एलसीआर चल रही है ऑलरेडी। तो लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में भी अच्छी है और इसका ग्रोथ को लेके कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। सफिशिएंट कैपिटल और लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी बैंक को क्रेडिट ग्रोथ के लिए।
क्रेडिट ग्रोथ के लिए आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी रहेगी और जैसा कह रहे हैं यूको बैंक पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। देखते हैं बाकी बैंकर्स की क्या राय निकल कर आती है। लेकिन मई 2019 से लेकर मई 19 से जुलाई 28 ये जो समय है करीबन मई जून जुलाई लगभग 2 महीने का समय, इस बीच में जो इंक्रीमेंटल जो लिक्विडिटी है उस पर 10% एडिशनल CRR लगाया गया है। ये है इरादा RBI गवर्नर साहब का। दूसरी बड़ी बात जो इस पॉलिसी में दिख रही है वो है महंगाई को लेकर। महंगाई के टारगेट्स बढ़ाए गए। अतुल जोशी साहब, आप कह भी रहे थे कि महंगाई सबसे बड़ी चिंता की बात RBI के लिए हो सकती है। बताएं सर, क्या टारगेट बढ़ाएं? ये रीजनेबल है, एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। अच्छा, महंगाई इससे ज़्यादा होगी आपके साथ? महंगाई इससे ज़्यादा होगी। देखिए, उन्होंने जो Q2 का टारगेट 1% से बढ़ाया है, 5.2 से 6.2 किया है। इसका मतलब है कि एवरेज 3 महीने की 6% से ज़्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने 2 चीज़ें बताई है। एक तो एक अजम्पशन दिया है कि खरीफ क्रॉप हमारा अच्छा होगा। वो बात उन्होंने कम से कम 3-4 बार रिपीट की है कि नॉर्मल मानसून है, खरीफ क्रॉप अच्छा होगा। जबकि हकीकत ये है कि खरीफ क्रॉप हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। अगर हम सिर्फ पल्सेस की बात करें तो पल्सेस का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो लगभग 9% कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। दूसरी तरफ देखें तो हमारी वीट की प्राइस, हम ऑलरेडी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, राइस हमारा स्टॉक काफ़ी कम हो चुका है। तो जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है, तो 2 चीज़ें अगर हम कंबाइन करें, एक तरफ कह रहे हैं कि खरीफ क्रॉप अच्छा है, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि खरीफ क्रॉप अच्छा नहीं होगा। रबी क्रॉप के बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, जो मैं भी मानता हूँ। जो अभी तक की बारिश हुई है उस बारिश के हिसाब से वाटर जो लेवल रहेगा रिजर्वोयर्स में, उसके हिसाब से हमारी रबी क्रॉप काफ़ी अच्छी होगी। तो इन्फ्लेशन को कूल डाउन होते होते फरवरी तक का टाइम हो जाएगा, जबकि हमको बहुत अच्छा एस्टिमेट मिल जाएगा, चाहे वो राइस हो, वीट हो, पल्सेस हो या वेजिटेबल्स हो। तो रबी क्रॉप काफ़ी अच्छा होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने 5.2% किया है। लेकिन Q2 में 7% के ऊपर भी चला जावे कोई एक आधा महीना तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। तो काफ़ी सेफ खेल है। दोनों तरफ उन्होंने बैलेंस मेंटेन करने की ट्राई की है कि खरीफ क्रॉप अच्छा रहेगा लेकिन मानसून भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन हम एवरेज आंकड़ा 6.2 के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक बात है। तो मतलब मामला थोड़ा दूसरी एक चीज उन्होंने कही, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इंटरनेशनल प्राइजेस वापस बढ़नी चालू हुए, चाहे वो ऑयल हो, वीट हो, राइस हो। तो ये भी उसकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट फिर से हमारे ऊपर आएगी। यानी कि अगली पॉलिसी में फिर से महंगाई का अनुमान बढ़ने का खतरा बरकरार। लेकिन बगा साहब, जैसा आपने कहा भी कि इस साल तो भूल जाइए कि ब्याज दरें घटेंगी, 2023 तो निकल गया। इस पॉलिसी से आपको और इस बात पर आपका मजबूत हो गया मामला कि गया काम से? और देखिए, सेंटिमेंट बिगाड़ा है 2 तरीके से। एक तो अगर आप 5.2 अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक, तो जून तिमाही अगले साल तक आप 5.2 पे हैं, 4 आपका टारगेट है, +-2 आपको मिलता है। तो ये काटने का तो सवाल आता नहीं है, अनलेस कुछ गड़बड़ हो जाए, इकोनॉमी ठंडी पड़ने लग जाए, तब तो अलग बात है। वो ये दिखा रहा है मार्केट के कट तो गया ऑफ द, मतलब अब तो ये फाइनेंशियल ईयर भी जाते हुए दिख रहा है। अभी तक तो हम दिसंबर तक ही सोचे थे, मार्च 2024 भी गया। इस नंबर पे तो कट नहीं कर सकते, बहुत इन पे आ जाएगा इम्पैक्ट। और अगर जैसे अतुल बोल भी रहे हैं कि यहाँ से अगर इससे बढ़ेगा इन्फ्लेशन, अगर 7% आ गया मंडे को इन्फ्लेशन, जो मेरी उम्मीद है 6.5 से 7 के बीच में आएगा, जो 6% है खाद्य पदार्थ, ये वेजिटेबल्स का टॉप जो हम कहते हैं, टमाटर, अनियन और ये पोटैटो, वो सब आप ऐड करिए, सीरियल वगैरह ऐड करिए, 1% तो वहीं से आ रहा है। तो 5.8, 5.9 वैसे ही आ गया। और चीजें आप ऐड करिए, बहुत अंदेशा है, बहुत बढ़िया है। तो ये इन पे प्रेशर आ जाएगा पार्लियामेंट से भी। और इलेक्शन का टाइम है, तेल की कीमत बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, ये 3 इश्यूज हैं। दूसरा जो बड़ी चीज की है, जो बैंक्स पे किया है जी, आप लेके चलिए 2 लाख करोड़ महीने का बैंक्स का बढ़ता है ये लाइबिलिटीज, तो आप 2.5 महीने का उसमें से निकाल रहे हैं। जो RBI थ्योरेटिकली 6.25% उनको दे रहा था, वहां पे आपको 0 मिलेगा। ये और इन्होंने ये सिग्नलिंग किया है, 8 सितंबर को ये हटेगा नहीं, क्योंकि जिन बैंक्स के पास सरप्लस है वो ये डाल रहे हैं। कई बैंक्स बोरो भी कर रहे हैं ओवरनाइट मार्केट में,
ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट्स हैं, ये रोक रहे हैं जो आपका 20% दौड़ रहा है क्रेडिट ग्रोथ और आपका क्रेडिट डिपॉजिट उतना नहीं आ रहा ऑन इकोनॉमी वाइड बेसिस। और जिनके पास एक्स्ट्रा है वो आरबीआई के VRRR वगैरह में नहीं आ रहे, वो बोले भी कि आप उधर नहीं आ रहे और आप यूज कर रहे हैं अदर फैसिलिटीज जो इमरजेंसी मेजर्स हैं जी। तो ये सेंटिमेंटली खराब है। मुझे लगता है शाम तक मार्केट रिकवर कर जाएगा। इम्पैक्ट उसका आप सोच लीजिए 2 लाख करोड़ में महीने का, तो से 5 लाख करोड़ पे 10% आपने हटाया, 50,000 करोड़ पे आप 6% अर्न करते थे, आपको 0 मिल रहा है। करेक्ट, वो इम्पैक्ट है बैंक्स की बैलेंस शीट। बैक ऑफ द एनवेलप मैंने नंबर देखने पड़ेंगे, नंबर मई 19 को क्या था और 28 जुलाई को, बट एवरेज करके मैं बोल रहा हूँ 2,500-3 हजार करोड़ बॉटम लाइन आता है इम्पैक्ट, इसलिए आपका मार्केट टूट रहा है। और ये इटली ने भी किया, विंडफॉल टैक्स जो लेके आए परसों सितंबर में, गिरे मार्केट, यूरोप के पूरे मार्केट बर्बाद हुए। कल फिर उन्होंने बोला 0.1 ऑफ रिस्क एसेट हम कर रहे हैं। ये सेंट्रल बैंक्स को अब कीड़ा पड़ गया है कि बैंक्स बहुत पैसा बना रहे हैं, इसमें से कुछ निकालते हैं। ये आरबीआई जो 6% उनको देता था, आरबीआई की कॉस्ट बैंक की बैलेंस शीट पे आ गई, बैंक के पीएनएल में आ गई, ये मार्केट को ट्रांसफर कर दिया है, बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया। और एकदम आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता दिखा। लेकिन विकास खेमानी साहब, एक बाजार पर और स्पेशली बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर भी व्यू लेना चाहता हूँ। शार्प रिएक्शन आया है, शायद लिक्विडिटी की चिंताएं जो थोड़ी बहुत निकलेगी और बैंक की बैलेंस शीट पर जो दबाव पड़ेगा वो बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। बताएं विकास जी, आप कैसे देख रहे हैं? जी, जो भी चेंज किया है गवर्नर साहब ने, मेरे को नहीं लगता कि बहुत मटीरियल है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बैंकिंग के शेयर जो हैं वो, और जो भी उनकी ग्रोथ आ रही है, वो उसका प्राइमरी एग्जांपल रीजन है क्रेडिट ग्रोथ जो है बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है, जो विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन लाइक दैट। तो ये छोटा मोटा टिंकरिंग करने से, जैसा कि अजय जी ने बताया कि 2-2.5 हजार करोड़ का वो नंबर मैंने किया नहीं, पर जो भी इम्पैक्ट आएगा उससे कोई मटीरियल फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है कि बैंकिंग की जो रिटर्न्स हैं लार्जली ड्रिवन बाई ग्रोथ कैसी आएगी, और जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट काफी रोबस्ट है और आरबीआई की पॉलिसी भी ग्रोथ सपोर्टिव रही है। ऑफ कोर्स उनको बैलेंस करना पड़ता है इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को, दोनों को। तो जैसा जैसा थोड़ा इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो दे ऑल्सो हैड टू सिग्नल समथिंग। तो मैं उसको कोई बहुत ज्यादा मानता नहीं हूँ कि इससे बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये छोटी मोटी टिंकरिंग है। मार्केट की जो ग्रोथ है वो अर्निंग ग्रोथ है कॉर्पोरेट्स की और बैंकिंग शेयर्स की काफी रोबस्ट रहेगी। ओके, तो क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है। फिलहाल एक जो शॉर्ट टर्म नी जैक रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। वृंदा जी बताएं, पॉलिसी के लिहाज से क्या फिर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लंबा समय लगेगा? अब हाँ, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि गवर्नर साहब जो जीडीपी को लेकर उन्होंने कहा, वो इस बार उन्होंने कहा कि इकोनॉमी हैज गॉट एनहांस्ड स्ट्रेंथ, यानी जीडीपी को लेकर गवर्नर साहब काफी कंफर्टेबल है। लेकिन इस ग्रोथ को हमें रिंग फेंस करके रखने की जरूरत है, इसको बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एक तो इन्फ्लेशन की तरफ से भी खतरा हो सकता है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया, और दूसरी तरफ जो है कि जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। वो तो एफपीआई इन्फ्लोज, यानी दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज। एफडीआई तो घट रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज है वो बढ़ रहे हैं, तो उससे भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए ये इंक्रीमेंटल सीआरआर लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ को एकदम स्टेबल रखने की ज़रूरत है, रिंग फेंस करके रखने की ज़रूरत है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी जो बाकी शॉक्स हैं और ग्लोबल इकोनॉमी से भी। और दूसरी तरफ उन्होंने जो यूपीआई के बारे में कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडिया में ऑफकोर्स मैक्सिमम है। वी आर लार्जेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड तो इसलिए इसको भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नर की जो अनाउंसमेंट्स आए हैं विद रिगार्ड टू यूपीआई। आपका सवाल जो है कि क्या ब्याज दरें घटेंगी, इमीडिएटली तो नहीं घटेंगी, क्योंकि लाइक आई सेड अभी तो ये इलेक्शन ईयर भी है और इतनी सारी अनसर्टनिटीज भी हैं। और एक और अनसर्टनिटी इस बार आरबीआई गवर्नर ने ऐड कर दिया है वेदर के बारे में। इसके तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने एक
वर्किंग पेपर लाया है कि जब हम बैंक जो रिस्क असेसमेंट करते हैं उसमें वेदर को भी लेके करें, तो क्लाइमेट चेंज को भी अपने क्रेडिट असेसमेंट में कैसे इसको इंक्लूड किया जाए, ये भी बैंक्स, रिजर्व बैंक इसके ऊपर ध्यान दे रही है, तो इसको भी लाने की कुछ हिंट्स दिए हैं गवर्नर साहब ने। तो ये इतनी अनसर्टेनिटीज के रहते हुए लगता तो नहीं है कि ब्याज दरें अभी घटेंगी तो 23 में तो नहीं घटेंगी, 24 में भी शायद बजट के बाद ही होगा, फरवरी में ना हो लेकिन शायद मार्च तक तो होगा, लेकिन तब तक तो ब्याज दरें घटेंगी क्योंकि इन्फ्लेशन का भी स्टेबल हो जाएगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी जो है अनसर्टेनिटी तब तक भी वो सेटल हो जाएगी। तो मुझे लगता है रेट कट के लिए अभी हम थोड़ा और इंतजार करें। बिल्कुल, तो वृंदा जी ने भी वही नोटिस किया जो मैंने किया था। आमतौर पर 4 चीज़ों का जिक्र करने वाले गवर्नर साहब ने आज 5 बातों का जिक्र किया है ग्लोबल को लेकर कि दुनिया भर में कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, फाइनेंशियल कंडीशंस कई देशों की बहुत अच्छी नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है और क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, वेदर चेंज, ये भी एक बड़ी ग्लोबल रिस्क के तौर पर आता हुआ दिख रहा है ना सर। अब मतलब पॉलिसी में जिक्र होने लगा, इसका मतलब मामला बड़ा मुश्किल वाला है। एक बार जल्दी से क्विक कॉल मार्केट पर मैं विकास सेठी साहब से लेता हूँ, उसके बाद मुझे अश्विनी कुमार साहब से भी एक सवाल पूछना है। विकास जी जल्दी से बताएं बाजार पर इम्पैक्ट वाली बात आपकी। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए जब उनकी स्पीच चल रही थी तो हमने देखा बाजार में पूरे निचले लेवल से रिकवरी होकर बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए, बट जैसे ये इंक्रीमेंटल सीआरआर वाली बातें करी तो उसके बाद बैंक निफ्टी पे प्रेशर आया, बैंकिंग स्टॉक्स टूटे और हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, बट इसका मुझे नहीं लगता कोई असर होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, और बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं या फिर मेरा एक पिक रहेगा अभी करंट लेवल्स पे, मुझे लगता है आरबीएल बैंक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 219 रुपए का, अभी 221 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और मेरा आज का